So what I was discussing is like, if you remember, when I write down this test method, this test class, so I only have I only have written up to this code, and then we have tested, where we have execute this test class. तो हमें जो coverage मिला था, that was somewhere around 23 or 24%. Why? Because we haven't created test data. तो हमने test data नहीं बनाया था. So that was the reason we were not getting covered. तो 100% coverage अपना नहीं आ रहा था, और precisely batch programming में जो execute method थी, तो हमारी execute method ना cover नहीं हो रही थी. तो फिर हमने क्या किया उसके लिए, we created the test data, एक अलग से मेथड बनाई, and then we created a test data and everything. और फिर ये जो मेथड हमने बनाई है ना, this method, we call this method inside over here. यहाँ टेस्ट, यहाँ पर जो अपनी टेस्ट मेथड है उसके अंदर आपने इसको कॉल कर लिया. So this is how we got the 100% test coverage as well. तो ये था हमारा बैच प्रोग्राम. ठीक है, चलो अब मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ. लेट मी क्लोज दिस आल्सो and let me open what we created common helper, है ना, ऐसे कुछ था ना उसका मेथड का नाम, क्लास का नाम था common helper. ठीक है, so let me open one of the class with the name common helper. Okay, see, this is the class what we have created that time. ठीक है, and this method create HR record. This method is a future method, but this method create HR record is not a separate method. We are actually calling this method. We are calling this method inside do DML helps. Inside this we are calling this, right? So what is really happening is like, whenever this method do DML operation inside this particular class, is this method is executing, right? Inside this class, if this method is executing, so inside do DML operation, the create HR record is automatically called. अभी हमारी फ्यूचर मेथड कौन सी है? हमारी फ्यूचर मेथड एक्चुअली ये है, आपकी क्रिएट एचआर रिकॉर्ड, एंड यू वांटेड टू हैव टेस्ट दिस. लेकिन इसको आप एक्सेप्शनली अलग से टेस्ट नहीं कर सकते. आप इसको अलग से टेस्ट नहीं कर सकते. व्हाट यू रिक्वायर टू डू, आपको इसके लिए डू डीएमएल ऑपरेशन को कॉल करना पड़ेगा. ठीक है, and then do DML operation कहाँ पर है? Do DML operation belongs to this. So ultimately what we require to do, we require to call do DML operations of this class. And when you call this method, do DML operation, this will automatically going to call this method create HR record, जो कि आपकी कौन सी मेथड है? फ्यूचर मेथड है. तो हमें इन शॉर्ट करना कुछ नहीं है. वी जस्ट रिक्वायर टू राइट डाउन द टेस्ट क्लास फॉर दिस मेथड. दैट इज व्हाट वी रिक्वायर टू डू. दैट इज व्हाट वी रिक्वायर टू डू. वन सेकंड गाइस, वन सेकंड. ओके, ठीक है. सो अंडरस्टूड व्हाट वी रिक्वायर टू डू. हमें अगर फ्यूचर मेथड के लिए इफ वी वांटेड टू राइट डाउन द टेस्ट क्लास, तो वो कुछ हमें एक्सेप्शनली अलग से नहीं लिखना है ना, हमें अलग से नहीं लिखना है. वी जस्ट रिक्वायर टू कवर दिस पर्टिकुलर डू डीएमएल ऑपरेशन इनसाइड कॉमन हेल्पर क्लास. तो आपको जो कवरेज देना है ना, वो कॉमन हेल्पर क्लास को देना है. आप कॉमन हेल्पर क्लास को दीजिए. इनसाइड कॉमन हेल्पर क्लास यू जस्ट रिक्वायर टू कॉल डू डीएमएल. और जब आप डू डीएमएल को टेस्ट क्लास जब आप लिखोगे, तो आपको कवरेज किसको प्रोवाइड करना है? कॉमन हेल्पर को. बिकॉज फ्यूचर एक मेथड है, फ्यूचर कोई क्लास नहीं है, वो एक क्लास का हिस्सा है. कौन सी क्लास? कॉमन हेल्पर क्लास. इस क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं हालांकि, एक स्टैटिक, एक अपना, एक जो है आपकी सेटअप, और दूसरी फ्यूचर मेथड वाली. एक नॉर्मल मेथड, एक फ्यूचर मेथड. लेकिन ये जो आपकी फ्यूचर मेथड है, दिस मेथड इज एक्चुअली बीइंग कॉल्ड, इनसाइड दिस. ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से काम करता है. चलो, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्लास नेम, बिकॉज इसी के हिसाब से वी ऑलवेज क्रिएट अ न्यू क्लास, राइट. सो एक नया अपेक्स क्लास बनाते हैं with this name, and at the end I am going to append this word test. ठीक है, चलो. So let's create a class for this. So this is my class, and I just required
to append one thing over here, and that is @istest. Now this class becomes a test class. Okay, this class becomes a test class. So the method test method as usual हमेशा इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है. ठीक है, in every test class this is one of the method, static test method, the keyword, and it is always void. Now give any name for this. For example, test future method. ठीक है, so this is my test method what I have created, and what I require to do, I just require to call common helper dot common helper. So there are two methods, create HR record जो कि हमारी future method है, but this future method because we are calling this inside this method doDML operation, आपको इसे कॉल करना है. आप इसे कॉल करिए doDML को, आप doDML को कॉल करिए, आपकी दूसरी वाली जो मेथड है that will going to be called automatically. ठीक है, that will be going to be called automatically because error has gone. Let me now save this code. हो गया, बस इतना सही. That's it. मैंने कहा ना बहुत छोटा सा कोड है इसका. अब let's try to run this test, है ना, टेस्ट रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है. चलो, सो टेस्ट तो रन हो गया है. कॉमन हेल्पर नाम है उस क्लास का, तो मैं चलता हूँ कॉमन हेल्पर ये देखो, हाउ मच टोटल 100% कवरेज, पूरा कवरेज मिल जाता है. ठीक है, आपको ये पूरा लाइन मतलब योर दिस लाइन हैज बीन कवर्ड, this is also covered and everything, है ना, ये सब पूरा कवर हो गया आपका. इनफैक्ट because you are calling this create HR record, तो create HR records की सारी लाइन कवर होगी, हो गया, पूरा कवर हो गया. So this is how we write down the test coverage for the future methods. ठीक है, तो ये इतना सिंपल है बेसिकली, है ना, इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, this is as simple as like this one. ठीक है, now in the same way let's write down the test classes for the queuable interfaces and everything, है ना, वो भी एक आखिरी पॉइंट बचता है, वो भी कवर कर देंगे. चलो, so what was the name of that queuable class? queuable हमने एक बनाया था, हायरिंग मैनेजर क्यूएबल. ठीक है, ये क्लास मैंने लिखी थी, हायरिंग मैनेजर क्यूएबल इंटरफेस. अच्छा, can anyone tell me what there were few of the drawbacks with the future method, and because of those drawbacks we actually shifted the logic to your queuable interfaces. लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मतलब बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस, एक चीज याद रखो हमेशा, ये जो आपका मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन जो आता है, जिसको अगर आप ओवरकम करना चाहते हो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू मिक्स योर सेटअप एंड नॉन सेटअप, ये जो ऑपरेशन है आपकी, तो अपार्ट फ्रॉम द फ्यूचर मेथड ना कोई दूसरा तरीका नहीं होता है. इन दी अपेक्स अपार्ट फ्रॉम द फ्यूचर मेथड देयर इज नो अनदर वे दैट यू कुड अवॉइड दिस. तो इसके लिए आपका एक ही हल है, एंड दैट इज योर फ्यूचर मेथड. चलो, अब आप मुझे बताओ यहाँ में से कोई कि व्हाट वेर फ्यू ऑफ द ड्रॉबैक्स ड्यू टू विच we should shift our logic, you know, instead of using future method we should shift our logic to queuable interfaces. कौन बता सकता है इस बारे में? What were the drawbacks? Future method not support a subject. बिल्कुल सही. Future method doesn't support as a parameter. You can only supply primitive data type, but you know, future method doesn't support S object as a parameter. मतलब शुभम जैसा आप बोल रहे हो कि future method doesn't support S object. This is not the complete answer. तो आप इसको कैसे बोले कि whenever we are trying to pass the parameter, future method only allows primitive data types in parameter. If you, inside the future method, if you are trying to supply any parameter, that must only and only be primitive. We cannot supply S object as a parameter to the future method. So this is one of. Second thing, yes, any more drawbacks with the future method? Come on guys, any more drawback with the future methods? Don't provide any tracking mechanism. Exactly, it doesn't provide any tracking mechanism because after executing bash programming, after executing schedulable or queuable, things are getting stored, and all of the things are the status are going to be get stored inside one of the object async apex job. But when you execute the future method, nothing has been stored inside async apex job. So that means we cannot track
what is the outcome of future method, whether the future method was successfully executed or not. Okay, this was the second drawback. Any more drawback? Any more drawback, guys? Yes, Divya? Sir, future methods doesn't support the chaining process. Chaining process, exactly. One future method cannot call another future method. That means the nesting of future method, chaining of future method cannot be done. So guys, these are the three drawbacks. These are the three drawbacks that we, due to which we should shift our logic for all long running operations, not for mixed DML operation. उसके लिए future method के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है. You have to use future method only for mixed DML operation. लेकिन if you are trying for any long running operations, if you are trying to execute something in the future, not right now, then don't go with the future method. Instead of that, you can using queuable interfaces. तो queuable interface कैसे लिखते हैं? We have written one of the class, like this was the class what we have created, hiring manager queuable नाम से. And to make it a queuable interface, it must implement one of the interface called as system.queuable. And there's only one method over here. There's only one method, and that is the execute method. Your bash class has three methods: start, finish, execute, you know. But your queuable interface has only one method. Your schedulable interface has only one method, and that is execute. Execute. Okay. So it's like, and the execute method has this parameter, system.queuable context. Okay. So we have written this, we have written this method. Oh, sorry, we have written this class, a queuable class. Now I wanted to check this. I wanted to test the logic. So what I will be doing, I will be writing a test class for that, and this is again very simple thing. This is again a very simple thing. See how to write this. Let me open this. Let me open a new class, an Apex class with the name hiring manager queuable test. With this name, I'm creating a class. Now see, you wanted to make this class as a test class, so include this annotation @is test. The scope could be public, it could be private also, no problem. Always remember, private can only be used for test classes. Apart from the test classes, no other class in the Apex programming has the scope as private. ठीक है. Every class, it could be a global class. Global भी आएगा अभी आपका, जब आपको मैं APIs पे लेके जाऊंगा ना, अपना इंटीग्रेशन जब हम API लिखेंगे, that time every class, every method will be global. अरे अभी आपने लिखा है ना बैच प्रोग्रामिंग पे, तो लिखा है because batch programming is something that is executed out of the organization. Batch codes are beyond the scope of organization, right? That is the reason batch class itself is a global class. Start method is a global method. Execute method and finish method, all of them are global. Why? Because these entities are something that is executed beyond the organization, है ना? तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वी आर डीलिंग विद द एंटिटीज दैट आर बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट टाइम वी मेक द क्लास एज अ ग्लोबल क्लास. प्राइवेट कहाँ करोगे? there's only one scope. There's only one scope. Test classes could be private. Other than that, कोई other class नहीं है ना, private नहीं होती से Apex में. So static test method, tst test, met test method. Static test method के वेरी नेम void, हाँ void तो देना है, and then test hiring manager queuable test queuable. So with this name, I'm creating the test method. This name, I'm creating the test method. So what I require to do? I just require to do one thing. Hiring manager queuable. Okay, this is my class name. And I require to create an instance of this. For example, HR queuable. So I'm just creating an instance of this object of this class, and so just like this. Okay. This is what I created. I just created an object of my queuable interface, my queuable class. And with the help of this, HR queuable, with the help of this, what I'm doing, with the help of this dot HR queuable dot execute. And here you require to give the context variable. So I'm making the context variable as null. I'm not supplying anything over here. Okay, I'm not supplying anything over here. With the context data has to be null. I will be saving this. Okay, बस इतना ही है. This is the very small code. बस और कुछ नहीं. You just require to call the class. Class को call करना है बस और कुछ नहीं.
ठीक है, you just require to call the class with the execute method, run it and let me now test the hiring manager. hiring manager queuable नाम से वो class है, hiring manager queuable. See, if you make a double click here, the class will going to be get open. ठीक है, तो 100% coverage हो गया उसका, because there is only one method and that is execute method. Execute method कोई coverage देना, so I have given the coverage to execute method. That's it. Okay, 100% coverage. So this is as simple as like this one. Let's go to the here and चलो organization का code overall coverage हमने कितना improve किया है एक बार देख लेते हैं. Yesterday I think it was 6%. Yesterday I think it was 6%. आज चलो देखते हैं कितना improvement हुआ. अरे 10%, 4% का improvement मिल गया आज हमको code coverage हमारा. ठीक है, so this completes test classes. ठीक है, this completes the test classes. So by tomorrow I'll be starting a whole new lecture, a whole new topic, and that is your visual force programming. Now there are only few things that are left. I think it's visual force programming, SOSL query. I think I required to take the SOSL queries also. What is left? Visual force programming बची है. SOSL शायद इसमें नहीं होगा. I additionally required to cut and paste it over here. हो गया. Visual force programming and SOSL query. These are the only two things that are left with the development part. Development में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है. But visual force programming will take time because काफी सारी चीजें टाइप करनी पड़ती हैं इसमें. So it will going to take time, है ना. But ये हो जाएगा. इसके बाद में I'm going to start with the concepts of integrations. ठीक है. Let me stop the recording first of all.